गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास हम डिजी क्लास कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास है आज हमारी इस डिजी क्लास की, जो हमने कल करा था उससे आगे कंटिन्यू आज करेंगे। लेट्स सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ओके, आपसे किसी भी एक स्टूडेंट से उठा के मैं जो भी इसमें बोला गया है जरा केयरफुली सुनना, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को उठा के यहाँ पे अपने पास लेके आऊंगी और आपसे मैं पूछूंगी क्या बोला है इसमें। ठीक है, सो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। Most commonly grown vegetable. Here are two potatoes. Take a close look and identify their differences. Potato B is sprouting. That means there are new plants emerging from it. Vegetative propagation in plants. Let's see. Potatoes are the world's most commonly grown vegetable. Here are two potatoes. Take a close look and identify their differences. Potato B is sprouting. That means there are new plants emerging from this potato. But the potato is an underground stem, a vegetative plant. It does not contain any seeds. Can a vegetative plant give rise to a new plant? हाँ जी, आप बता सकते हैं कैन अ वेजिटेटिव पार्ट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट? क्या वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं न्यू प्लांट अराइज हो सकते हैं उससे? यस, लेट्स सी। Yes, the production of a new plant from vegetative parts of a plant, that is, the stem, root and leaf, is called vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction which allows new individuals to be generated faster from a single parent. The new plants produced are the same as the parent plant. Let's learn more about this method of asexual reproduction in plants. What are the advantages and disadvantages of generating identical plants? What are the advantages and disadvantages of generating identical plants? Advantages क्या होंगे अगर identical plants होंगे तो? बता सकते हो आप में से कोई भी? चलिए इसे देखिए अच्छे से। जल्दी ग्रो करेगा। हाँ जी, इससे जल्दी ग्रो करेगा। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं इसके। चलिए देखिए इसको अच्छे से। Many plants propagate naturally through their stems. Are the stems of plants always erect and above the ground? Are the stems of plant always erect and above the ground? Let's see. No, some stems are creepers. They grow parallel to the ground, and some plants have underground stems. Tubers, as in the potato. Rhizomes, as in ginger. Stolons, as in strawberry. Runners, as in grass. Bulbs, as in onion. And corners, as in gladiolus. Each of these plants has special buds that grow into a new plant.
instance, has buds in the structures called eyes. They are called so because of their peculiar eye shape. Under favorable conditions, these buds start growing into new plants. This is a sweet potato. Can you guess what part of the plant this is? Yes, the potato is a modified stem, but the sweet potato is a swollen root for storage of food. Under favorable growing conditions, the buds on it give rise to new plants. Plants such as dahlia, tapioca, and asparagus also propagate through roots. Collect some storage roots and try and locate the buds that can grow to form new plants. This is a biofilm plant. Observe its leaves carefully. What are these structures on the leaves? These structures are the new plantlets growing on the leaf. These leaves have buds in the notches of the margins that can grow into new plants. When the leaf falls, the notches of the margins that ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ब्राइफिलियम जो होता है उसका पत्ता, जो ये ब्राइफिलियम का लीफ है, इस लीफ पे साइड में से न्यू प्लांट राइज होने लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वहाँ से टूट के नीचे गिर जाते हैं सॉइल में, तो सॉइल में वो नया प्लांट राइज हो जाता है। can grow into new plants. When the leaf falls, these plants grow as separate plants. Other examples of plants that propagate via their leaves are the walking fern and the begonia. ये लीफ के थ्रू होते हैं सारे। To standardize the quality of plant products and to grow them faster for commercial purposes, some plants are propagated artificially. Artificial methods of vegetative propagation include cutting, grafting, layering, and tissue culture. ये सारे मेथड क्या थे? आर्टिफिशियल करने के, मतलब अपने आप टूट के गिर जाता है तो उसमें से नया प्लांट हो जाता है, तो वो नेचुरली गया। लेकिन अगर हम उसको जैसे काट के लगाते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग है, नीचे ही उसको दबा देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। ये मेथड आर्टिफिशियल होते हैं। In cutting, a part of the stem with a joint or node in it is cut and covered with soil. This method is commonly used for the commercial propagation of rose and sugarcane. In grafting, a stem cutting of one plant is inserted into the stem of another rooted plant. रोज प्लांट है, जो रोज प्लांट को भी ग्राफ्टिंग के थ्रू इस तरीके से उसको सीधा ऐसे नहीं काटते, उसको ऐसे टेढ़ा, जैसे अभी देखो इसमें दिखाया गया था, टेढ़ा काट कर उसको लगाया जाता है। एक ही प्लांट में दो तरीके के फूल निकल आते हैं। देखा है कभी रोज प्लांट इस तरीके का किसी पार्क में? नहीं।
तो बेटा इस क्या होता है, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है यानी कि आपका जो रोज़ वाला प्लांट होता है उसका अगर एक बड हम काट देते हैं, येलो कलर का फ्लावर उसमें आता है, उसको वहाँ से हमने काट दिया, उसी के इस तरीके से जैसे ग्राफ्टिंग इसमें दिखाई गई है, सेम इसी प्रोसेस से उसको साइड में से ग्राफ्टिंग करके काट कर और उसके जो हम जहाँ से प्लांट में से काटेंगे, जो एक प्लांट सीधा निकला है उसको भी ऐसे काटना है, और जहाँ से लेना दूसरे प्लांट से उसका भी ऐसे ही साइड में से काटना है, और इस तरीके से दोनों को अटैच करके उसको हम बांध देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बांध देंगे, फिर वो उसके साथ अटैच हो जाता है, और उस पर जब फ्लावर जो निकलेगा, था येलो प्लांट, हम रेड प्लांट में से लेके आए, और जो नया फ्लावर उसमें से निकलता है वो फ्लावर किस कलर का आएगा, दोनों को मिक्स करके ऑरेंज कलर का फ्लावर निकलेगा। सारे येलो निकलेंगे, कुछ आपके उसमें से ऑरेंज भी निकलने लग जाएंगे। ओके, तो जहाँ प्रॉपर तरीके से जिस फार्म में देखा जाता है उनको वहाँ पे किए जाते हैं ये प्रोसेस। The joint is covered with moist material. Soon the two stems unite and the inserted cutting grows from the rooted stem. Grafting is sometimes used to bring the characters of two or more plants together. It is commonly used in plants such as rose and mango. In layering, a branch is covered with a moist soil layer. This branch then grows roots and a new plant develops. This process is called layering. The jasmine plant is propagated through layering. लेयरिंग किसमें हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। और जो आपने मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ऐसा कोई प्लांट है जो लेयरिंग के थ्रू हो जाता है? कुछ ध्यान है किसी को? घर में अगर किसी ने प्लांट्स लगा रखे हैं तो कुछ है आइडिया इस तरह का कि किस तरीके से लेयरिंग वाला प्लांट निकल के आता है? मिंट, मिंट किसे कहते हैं बेटा? घरों में चटनी खाते हो? मरबे का बोल रहे हो? हाँ जी, वो चटनियाँ किस किस चीज़ की बनती हैं आपके? कौन कौन से पौधों के में मिक्स करे जाते हैं उसको? धनिया, धनिया, पुदीना, मरबे का, हाँ मरबे का नहीं, पुदीना जो होता है आपका, वो लेयरिंग प्रोसेस से उसमें अगर उसको कभी लगे हुए देखा है तो उसकी जो एक और निकलता हुआ उसी को नीचे कर देंगे तो लेयरिंग प्रोसेस से वो भी निकल आता है। ठीक है, आज एक काम करना सारे, मौसम खराब है थोड़ा मौसम ठीक हो जाने देना, घर में एक छोटा सा गमला लेके करके देखना, उसमें लगाओगे तुम्हारी मम्मी के लिए भी काम में आएगा और वैसे भी तुम्हें भी कुछ उससे पता ही चलेगा और एक नया जीवन तो निकालोगे। तो क्या करना है, कोई भी प्लांट लगाओ ना, वैसे तो है बहुत है, आप लोग खुद भी करके देखो। नहीं लगा हाँ बस आगे देखिए। Tissue culture is a modern biotechnological method of propagating plants in labs using a very small vegetative part. In this method, a small piece of stem, leaf, or root is placed in a medium containing growth-promoting chemicals. The cells of these plants divide and give rise to a new plant. Using this method, a small piece can be the source of many new plants. How can tissue culture help in increasing crop productivity? ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपके कितने टाइप्स के हैं? क्या पढ़ा आपने? आ जाओ बेटा, आप भी आओ, आ जाओ बाहर, जल्दी आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है, आ जाओ मास्क, आ जाओ यहाँ पे मास्क।
यहाँ पे बोलो, इसको एक्सप्लेन करो, यहाँ सामने फ्रंट। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ना, दो मेथड का होता है एक वो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जो नेचुरल होता है उसमें स्टेम से होता है, रूट से होता है और लीफ से होता है। और दूसरा मेथड होता है आर्टिफिशियल, उसमें टिश्यू कल्चर होता है और कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग होता है। तो ठीक है, तुम्हारे दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में आपके कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू, और नेचुरल में आपके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, उसके रूट से, स्टेम से और लीफ से। रूट से कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे स्वीट पोटैटो, ठीक है। और स्टेम से जो पोटैटो है बेटा वो स्टेम में ही काउंट होता है आपका, उसको रूट में कभी काउंट नहीं करोगे आप। जमीन के नीचे बेशक लगता है लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है, ठीक है। और लीफ में आपके ब्राइफिलियम है जो लीफ से निकलने वाले प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन Flowers are so attractive. Don't we all love flowers and their fragrance? Flowers are the reproductive organs of angiosperms, the flowering plants. Can you identify the different parts of a flower? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको मिला के तीनों को क्या बोला गया है, पिस्टल। और ये फीमेल पार्ट है फ्लावर के, ठीक है। The stamens are the male reproductive parts of the flower. A flower may have one or more stamens. The stamens are collectively called the anthricium. The anthers produce pollen grains. The pollen grains contain the male gametes required for fertilization. The carpels are the female reproductive parts of the flower. A flower may have one or more carpels. The carpels are collectively called the gynecium. The ovary contains one or more ovules where female gamete. हाँ जी, मेल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, फ्लावर के स्टेमन। और उसको एक और नाम बताया है, उसको क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। और फीमेल के क्या बोला गया है, कार्पल। और उसका दूसरा नाम क्या है, गाइनोस्पर्म। Gametes are formed. The female gametes are produced within the embryo sac inside the ovule. The central part of the ovule, which contains the embryo sac, is called the mucellus. Now, how do the male gametes produced in the pollen grain reach the female gametes in the ovule? Different events occur which help the plant to achieve this. Let's see what these events are. The pollen grain has to reach the stigma of the carpel. This is achieved by pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. If the pollen is transferred from the anther to the stigma of the same flower, or to a flower on the same plant, we call it self-pollination. If the pollen is transferred from the anther to the stigma of a different plant, we call it cross-pollination. Agents such as wind, insects, or birds help the plant to achieve pollination.
Can you guess why flowers are so attractive? In the anther, diploid pollen mother cells divide meiotically to form haploid pollen grains. A pollen grain is haploid and contains a generative nucleus and a vegetative nucleus. The generative nucleus divides mitotically to form two haploid male gametes. Once the pollen falls on the stigma, the male gametes have to reach the ovule. So, the pollen starts germinating and forms a pollen tube. After the germination of the pollen grain, the vegetative nucleus migrates to the tip of the pollen tube, where it is called the tube nucleus. How does the pollen grain recognize the stigma of its own species? After the pollen has stuck to the stigma, the chemical substances present in the pollen and carpillary tissue interact with each other. If the pollen grain belongs to the same species, the carpillary tissue recognizes it and triggers the formation of pollen tube. The pollen tube passes through the style to reach the ovule. As these events occur before the fusion of the male and female gametes, they are called pre-fertilization events. The wall of the ovule is differentiated into protective inner and outer integuments. There is, however, a minute opening in one end called the micropyle. The pollen tube enters the ovule via the micropyle. Then it reaches the center of the ovule and penetrates the wall of the embryo sac and bursts open. At this time, the tube nucleus degenerates, leaving a clear passage for the entry of the male gametes. Within the embryo sac, there is an egg cell and two polar nuclei. Just before fertilization, that is, when the male gametes are released into the ovule, the two polar nuclei fuse to form the secondary nucleus. One male gamete fuses with the egg cell and forms the zygote. The other male gamete fuses with the secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus, which will give rise to the endosperm. Since three nuclei are involved in this fusion, it is called triple fusion, and the resulting endosperm is triploid. Did you know that the tender coconut water you drink is actually the endosperm of the coconut? The fusion of the male and female gametes is called fertilization. It's also called syngony. You just saw that two fusions occur inside the embryo sac. One forms the zygote and the other forms the primary endosperm nucleus. That's why fertilization in flowering plants is called double fertilization. After fertilization, the petals, stamens, style, and stigma fall off. The triploid primary endosperm nucleus divides mitotically into a mass of nuclei, which become separated from one another by thin cell walls. This becomes a semi-fluid food storage tissue called the endosperm. The nucellus becomes crushed out of existence as the embryo sac expands.
However, sometimes it may persist and form a thin layer outside the endosperm called the perisperm. Endosperm formation takes place before embryo formation. Can you guess why? The zygote then divides mitotically to form the embryo. The embryo differentiates into radicle, young root, plumule, young shoot, and either one or two cotyledons, seed leaves. The ovule containing the embryo is now called the seed. The integuments of the ovule form the seed coat. The outer integument becomes the testa, and the inner integument, if it persists at all, forms the tegmen. After fertilization, the ovary grows and develops into the fruit. The wall of the ovary gets converted into the wall of the fruit, called the pericarp. The seeds within the fruit are ready to give rise to new plants under appropriate conditions. Pollination, formation of pollen tube and release two male gametes into the ovule. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट और एंडोस्पर्म के साथ वो जब फर्टिलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. वेदरिंग ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जब ये इसके बाद फिर क्या बन जाता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर. ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में. वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ द फ्रूट, और ओव्यूल सीड्स में, और इंटीग्रेमिनेट्स सीड कोर में, एक्सेल्स एम्ब्रियो में, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे. टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स.